This video is not about detailed topics. This video is only to help you understand the structure of CSIR-NET Mathematical Science Syllabus. बट टॉपिक में जाने से पहले सिलेबस का मार्क्स वगैरह को अच्छे से समझा देती हूँ, ओके। सो द पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट ए बी सी। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, बट यू गेट चॉइसेस वर्थ मोर देन 400 मार्क्स। इसमें पार्ट सी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ नो निगेटिव मार्किंग एंड कैरीज द हाइएस्ट वेटेज। देखो, पार्ट ए जो हमारा 30 मार्क्स का है और जनरल एप्टीट्यूड, सो इट इज़ कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट। एंड देखो, रियल गेम पार्ट बी एंड पार्ट सी में होता है, जहाँ मैथ्स के डीप कंसेप्चुअल और क्या बोल सकते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट इज़ वाई नोइंग सिलेबस क्लियरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। For better understanding, we can divide the syllabus into pure maths and applied math. In pure math, the focus is mainly on theory and proofs. So, subject like in algebra, real analysis, and topology come under this part. And in applied mathematics, the focus is more on problem solving. Unit wise explanation coming in next video.